That's important to understand. So, okay, so you asked me before to remind you of the topic that we were speaking on. So, yeah, Yes. we were trying to see what we can make out of Krishna through these instances. Mm-hmm. तो आपने जब बताया था कि सातों को जब मारा था तो उनके पीछे बहुत सारी लर्निंग्स थी विच इज़ अनदर डीप चैप्टर सो वी Yeah. लेफ्ट ऑफ फ्रॉम देयर Yeah, we also went to Mathura. Krishna या killed Kans. यस And so that's like the childhood pastimes of Krishna. And how do we know it's not myth? Because then a lot of people say, I only believe in जो मुझे दिखता है मैं सिर्फ उसमें ही मानता हूँ. I don't believe in something I can't see. I'll say you can't see your brain, but then okay, you can see your brain through an X-ray. पर यू कैन सी प्लेसेस इन वृंदावन जहाँ पे आपको भगवान के चरण के निशान दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको उनकी लाठी के निशान दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि वो जो रॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ बटर वाज स्पिल्ड ऑन इट ड्यूरिंग दैट टाइम 5000 years ago. Kurukshetra is there, the Ram Setu is there. If you want, there is a lot of evidence, but फिर भैंस के आगे बीन बजाने का फ़ायदा नहीं है. अगर आप नहीं समझना चाहते हो then there's nothing that we can do about it. I came to the right source because I wanted to bring the topic of Radha and Krishna, which is the most, I think, most spoken of, but with a wrong intention or consent maybe. we'll speak about Radha Krishna once we um, know of Krishna first. Yes. We'll speak about Radha when she comes into the chapter maybe later. Yes. So actually we've left Radha behind because Krishna has left Vrindavan. He's gone to Mathura now. He's not Okay. coming back to Vrindavan. Okay. So understanding Radha Rani is like a more complex scenario than of understanding Krishna, because Krishna is like the Shaktiman and she's the Shakti. She is the expansion of Krishna. He was the only one in the beginning, and then he expanded himself to Balaram, Pradyumna. There's a number of expansions that he created, and then these were all from the left side. Krishna ke left side se Balaram was created, and from the right side of Krishna, or wait, yeah, no, Krishna ke left side se Radharani was created, and from the right Balaram was created. So when Radharani comes into the picture, people usually visualize it with, okay, they were boyfriend or girlfriend, or they were maybe in a illicit relationship because they were not married. Or I've also heard a friend of mine said ke, because now people know that I'm spiritual, they talk to me about Bhagwan, and then it's funny to see how much do they know about Bhagwan, because या इट वाज फनी. ही सेड कि मैंने पूरी महाभारत देख ली, और फिर उसके बाद जो वो वाला सीरियल था ना जिसके अंदर कृष्णा एंड राधा रानी स्टार्टेड टू हैपन, बट देन कृष्णा टू गो, मेरे से वो देखा ही नहीं गया बिकॉज आई वाज सो सैड टू सी देयर लव लाइफ नॉट बी कंप्लीटेड. एंड व्हाट डू यू नो देयर लव लाइफ वाज नॉट कंप्लीटेड? हाउ डू यू इवन realize of what love is? People, love is not lust. That's the most important thing to understand. काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है, एंड व्हाट हैपेंस विद राधा एंड कृष्णा इज इनकंसीवेबल. इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम, आई टोल्ड यू, इट हैज़ I'll have to count, I'm bad with numbers. It has 10, 12. It has 12 cantos, और वो हर canto भी further divided into books. What do you mean by canto? So like Bhagavad Gita is one book. Okay. One book talks about dharma, arth, kam, moksha. Okay. Yeah, and ठीक है. 5 topics of Bhagavad Gita. That's what Bhagavad Gita talks of. So that's one book that which is talking about everything. ठीक है. Now Srimad Bhagavatam has 12 cantos. Matlab it is talking about all these different. Bhagavatam has 10 topics that it talks of, लेकिन वो 12 skand में divided है. And the 10th canto of Bhagavatam talks about Radha and Krishna, the pastimes of Krishna in Vrindavan. But before you reach the 10th canto, the 10th fat book, there are 9 more cantos which are divided into further 4-5 books each. वो पढ़ने से पहले you're supposed to read all of that. And if you don't do that, you cannot understand Radha and Krishna, क्योंकि हम सिर्फ वही perceive कर सकते हैं जो हम experience कर सकते हैं ना. अगर आप मुझे कुछ out of the body experience के बारे में बताओगे, मुझे नहीं feel होएगा, ना मुझे समझ आएगा, क्योंकि ना मैंने देखा, ना मैंने किसी को होते हुए देखा. I have not experienced it. It's like I not understand it, which is normal on our part. Yeah.
पर इसीलिए फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट राधा एंड कृष्णा इज, पहले 9 कैंटोज और हैं जिसके अंदर एक एक कैंटो के अंदर 2 बुक्स भी हैं, बीच बीच में 3 बुक्स भी हैं. थर्ड कैंटो हैज 3 बुक्स. सो there's a lot of more before you start talking about Radha and Krishna. And why do we have to go through 9 cantos before we talk about Radha and Krishna? ताकि हम वो 9 cantos में ये सीख पाएँ कि हम कितने insignificant हैं और भगवान की पोटेंसी कितनी ज़्यादा है. उनकी बेसिक मटेरियल पोटेंसी इतनी ज़्यादा है, तो उनकी इंटरनल पोटेंसी राधा रानी कितनी ज़्यादा होएगी. इट्स आउट ऑफ अ ह्यूमन्स कैलकुलेशन, इसलिए इट्स फार ऑफ एंड इट शुड बी देयर. हेल्प मी अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हो, बट स्टिल टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट, लाइक कितना क्या है, लाइक सीरियसली मतलब. Yeah. So there's this beautiful saying that I've heard somewhere. जो हनुमान जी हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वी नो हनुमान जी. तो हनुमान जी के जो एक बाजू में जितना बल है ना, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट ही कैरीज इन वन हैंड, विच इज़ अ लॉट. ही गॉट अ होल माउंटेन ऑन हिज हैंड, अ पाम. उनकी एक बाजू में जितना बल है, उतना बल बलराम जी जो कृष्णा Yeah. के ब्रदर हैं, उनके सिर्फ एक हैंड में है. Balaram, because Balaram, I told you, is Shesh. He carries the weight of the entire world. The Lord rests on him. So उतना वो पूरा बल मिला के उनके सिर्फ एक हाथ में है बलराम जी के. इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट जो डिवोटीज़ होते हैं, भक्त होते हैं, दे गो टू बलराम एंड दे आस्क फॉर बल, because he gives the spiritual power or the spiritual strength to stay in Krishna consciousness or in bhakti. So जितना हनुमान जी के पूरे हाथ में बल है, उतना बलराम जी के सिर्फ एक हाथ, जितना हनुमान जी के एक पूरे आर्म में बल है, उतना बलराम के सिर्फ एक हैंड में है. एंड देन जितना हनुमान जी के एक हैंड में बल है, उतना कृष्णा की सिर्फ एक स्माइल में है. Yeah. So only when he smiles, everything's just fluttered and it's just rested on. And then Krishna का एक नाम है Madan Mohan. Have you heard of? Yes. So Madan मतलब do you know that small baby who's nanga, has this ring on his head, has wings, has hair? Cupid. Yeah. Cupid को हिंदी Yeah. में मदन बोलते हैं. Oh. So he's the lord of love. उनका काम है इस मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को प्यार में डालना, where people feel this is love, but then that's his trick of putting two people into complicated relationships and then they keep fighting throughout their lives or whatever. We know what does love mean for people here. So that's his job, Madan. So Madan ka basically jo kaam hai, he's controlling the entire world. Everybody in this world today. Maybe it's not between a girl and a boy, it's between a girl and a girl, boy and a boy, or X and X, and there's a lot. ठीक है. We have a plus there. So that's happening. Basically मदन के कंट्रोल में पूरे, everybody in this world is under the control of the lord of love, Cupid, मदन. भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोह लेते हैं, जो मदन को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट्स मदन मोहन, कृष्णा. बट देन राधा रानी, नाउ कृष्णा की जो स्माइल में जो स्ट्रेंथ है, वी सॉ हाउ मेनी पैरेलल्स टू इट, बट जो कृष्णा की एक स्माइल में है ना, उस that's nothing compared to one glance of Radha Rani. She just looks at you and you're done with. So Krishna has said Madan Mohan, Radha Rani का नाम है मदन मोहन मोहिनी. वो कृष्णा जो मदन को मोह लेते हैं, वो उनको भी मोह लेती है. राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, that's her name. So the potency that she carries cannot be explained. That's the answer to your question. Yeah, we've got all these books to study before we reach to the topic of her, because otherwise if we don't do that, or if we go to a person जो हमको सीधा राधा कृष्णा के बारे में बता रहे हैं and he has not understood the first 9 cantos, it's like taking information from, or maybe drinking milk that's poisoned by snake. It's like that. We should not jump to the point of Radha and Krishna because हम it's समझ not ही नहीं mundane. पाएंगे. Yes, it's Yeah. not mundane. We might take it in a wrong way. Yes. आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है. आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं. मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें. इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ.